square centimeter is the area of the rectangle, where the side ratio is 1:2.5. Okay. Yes, sir. Yes, sir. That question. Yes, sir. So what about the sides then? 6:15. Yes, sir. 6:15. Now that 6 centimeter by 15 centimeter rectangle represents a rectangle of 80 meter by 200 meter. Yes, sir. So 6 centimeter represents 80 meter and 15 centimeter represents 200 meter. Ratios are same. The same RF you will get. Yes, sir. Okay. Now 15 centimeter is the standard length. Okay. Now when that 15 centimeter is the standard length on a plain piece of paper, then that a value given, it is nicely given for our benefit. You take a length of 15 centimeter, how much distance it will represent? 200 meters. 200 meter. 200 meter. So Yes, when sir. you subdivide that 15 centimeter length in 7.7.5, then what about each 7.5? 100 meter. 100 meter. 100 meters. Subdivide this 7.5 centimeter in 10 equal parts. So what about this smaller subdivision? 1 meter each. 10 meter each. 10 meter. 10 meter. Yes, 10 sir. meter. 10 meter each. Now 10 meter each. that 10 meter is represented by less than a millimeter, 0.75 millimeter. Okay. Okay, sir. Then Sorry. we can draw the diagonal scale above for So this dividing it into 10 diagonal parts. scale perpendicular to that baseline. So Yes, sir. Yes, subdividing sir. in 10 equal parts by diagonal methods. So 10 meter divided by 1/10, 2/10, 3/10, etc. That is 1 Yes, sir. meter, Yes, sir. Yes. 3 meter up to 9 meter. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. I couldn't get. Thank you, sir. Okay. Anything? Any more? Sir, should we have So to what is draw? the meaning of comparative scale? Comparative scale means uh, have you seen any diagonal scale? Yes, sir. Do you have that plastic 6-inch scale there in your instrument box? What, sir? आपके पास कोई डायगोनल स्केल है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं में? नहीं रियलिटी में नहीं देखे सर, ऐसे ड्राइंग करने में वैसे अच्छा, रियलिटी में नहीं देखे। जब उसका फोटो देखा है, मैंने तो भेजा था ना वो फोटो, एक क्लास में डिस्कस भी किया था. So if you have taken that screenshot, that same scale, on one side inch marking is there, on the other side centimeter millimeter marking is there. Okay. So Yes, sir. you take a small piece of pencil, you place it on the centimeter millimeter side for one instance. Then you change its location, you place it beside the inch side. The pencil, that small piece of pencil, that is of one unique length, but representing its length in two different units, those are different. So the same pencil, if you measure along the inside, if it is coming to be 4 inches, then on centimeter side, if you place it, that same length of pencil in that centimeter unit, how much it will read? Just little above 10 centimeter. Yes, sir. So that is the comparative scale. Same Okay, sir. object distance to be measured in two different units of measurement. It may be yard, foot, inch. It may be meters, decimeter, centimeter. Suppose, what about your height? 154 centimeters. 154 centimeter. That is in metric. If I 165 ask, centimeter. if I ask you in feet inches, जो पहले जमाने में वही बोलते थे, ये सीनियर बच्चन जी का हाइट क्या है? 36. 1 feet equals to. अरे बेटा वो कन्वर्सन नहीं, वो लोग बोलते हैं 6'2". अच्छा ऐसा कुछ बोलते हैं ना, 6'2" मतलब 6 फीट 2 इंच. अच्छा. And same height in the modern or this current system, you are using it in centimeter or meter centimeter. So that is
the way of representing that comparative scale, that is same object distance to be represented in two different length measuring units. That's all. वही तो बोला है ना, एक क्लास में 45 मिनट्स 50 मिनट्स में बहुत ज्यादा कुछ तो हम सीख नहीं सकते. Even if I am interested for that, it will take a complete full year to discuss about one subject only. But उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं. तो मेनली प्रैक्टिकल क्लास होने से अच्छे से, मतलब अगर ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लास होने से ठीक से समझ में आ जाता है. Work 24 hours a day, काम जो बचे वो रात में करो. Yes, sir. We just get an overview from the class. Exactly. And some standard representative practice problems. Okay. Yes, sir. But first of all, you utilize your strength of your batch. Okay. So many people differently, they are concentrating on different aspects of different chapters, different style of problem, different way of solving the things. But you must be in touch with them. I know you have that सोशल मीडिया लाइक प्लेटफॉर्म. ओके, कुछ भी है ना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, शेयर करो. कुछ भी नया प्रॉब्लम देखो, एक चीज करो ना, किसी भी बुक ले लो. सपोज देयर आर 10 प्रॉब्लम्स इन द चैप्टर, सो सब डिवाइड इन 10 ग्रुप्स. एक एक ग्रुप एक एक प्रॉब्लम करेगा, बस हो गया. एंड देन यू एक्सचेंज. इन्वेस्ट किया आपने एक सोल्यूशन, प्रॉफिट में मिल गया 9 मोर सोल्यूशन. और ये जो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसमें हम क्या सीखते हैं? इकट्ठा रहो, टुगेदर रहना. एग्जैक्टली. Investing, sir. Before joining NIT Durgapur, you were the competitors. You never helped anybody in that competitive exam hall because आपका एक आंसर के मदद से बाकी लोग आपको पीछे छोड़कर निकल जाएगा बहुत आगे. But when you are in the same platform, now your identity will be NIT Durgapur student. And after 4 years, you will be NIT Durgapur alumni. One day, you will be coming back to your institute for recruitment through campus interview after 10-15 years. बेटा जिंदगी बहुत कुछ सिखाता है हमें. Okay. Anyway, please go through any book and learn this thing. And whatever you learn, anything new, just teach me, because this is not a teaching process. This is not one-way journey or one-directional movement of information. एक गेट होता है ना, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, so many things. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. So ये गेटवे भी दोनों तरफ Yes, खुला sir. हुआ रहता है. आप लोग मुझे नहीं सिखाओगे तो अगले बैच को मैं कैसे सिखाऊंगा कुछ नया चीज? ठीक है. सो मुझे सिखाने के लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा. Okay, then any more question? Otherwise, I will close my भाषण. सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा सर? वहीं. एक क्लासरूम का रिकॉर्डिंग. यस सर. I intentionally do not give this recording. This is my approach of taking the class. That is, in that case, you will be simply get dependent on this fixed information. You can make yourself these recordings. The facility in MS Team is there. You can continuously take on the screenshot for important diagrams. Then you sit for half an hour on this information and make your class note copy. School में जैसा किया था, I still believe that process is useful now also. It's not like that college मतलब एक कुछ different हो गया. सीखने का तरीका एक ही है. पहले सुनो, फिर सोचो, फिर यूज करो अपना सोच.
Or along with that, my advice is go through the solved example first. Many numbers. Then you see the solution, how they have solved this. आंखें खुल जाएगा बेटा तेरा, बहुत कुछ देख सकोगे. यस सर, सर बहुत बहुत चीज सीखने को मिलता है सर. हाँ, और YouTube देखना, अभी मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं आप लोग. YouTube देख, ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ, इस पर बहुत सारे वीडियोस है, फैंटास्टिक वीडियोस आर देयर. इवन टुडे आल्सो आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस ऑल nicely available this video. All these resources are fantastic. पहले तो किताब होता था हार्ड कॉपी, अभी ये जो एनिमेशन आया है ना, पता नहीं, वो तो लोग झट से सीख जाते हैं. यस सर, विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है सर. हाँ वही, पहले एक इंजीनियरिंग ड्राइंग को विजुअलाइज करने में बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत तकलीफ झेलना पड़ा बेटा हम पुराने जमाने लोगों को. You take that benefit, you take that help from us and complement or supplement. फिर এখন ক্লাসের ভুলে গেলেও আবার পরে ভিডিও দেখে নেওয়া যায়. वो वीडियो मेरा मुझसे बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा YouTube में, और मैं जो पढ़ाता हूँ you don't depend on that recording, because आसपास का so many बकवास मैं करता हूँ क्लास में, it will be confusing for you. For this 3 hours lecture, it is hardly 15 minutes recording. You will get everything in one video. कोई 3 घंटे से क्या करोगे? Okay. And definitely, whenever I write something on this, here suppose it is the horizontal plane 1, 1, the vertical plane this 2, 2, it is coming to be this, your trigonometry like this thing, two mutually perpendicular straight lines. These are first quadrant, second quadrant, third, and this fourth. All these things you can capture it. Do you have Windows 10? So Yes, those sir. who have 11. Yes, sir. Yes, sir. now those who have Windows 10, automatically you can get everything recorded, including the machine voice also. Those who are having some older version with some old laptops, then one thing you can do. Everybody we have our mobiles, but the thing what is running there on screen, simply वो वीडियो करने लगो ना मोबाइल में, उसको सेट कर दो इन फ्रंट ऑफ OBS स्टूडियो से सारे होते हैं, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी Plus लैपटॉप, screen OBS स्टूडियो बोल एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं. तो वो बताना तेरे दोस्तों को. Okay, but sir. first thing you have to listen very carefully with full क्या Attention. Concentration. attention and Concentration. Dedication and concentration. okay. Sir, we think sir we get this point sir by मतलब बाद में देख लेंगे, अब तो हो रहा है क्लास, होने दो, बाद में यही से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता. if I give you that printed notes, the same thing happens. Okay, we get a little bit reluctant, और एग्जाम जब आ जाएगा देख लेंगे. And this is my experience. All these NIT students, they rush to the nearby photocopying shop just before examination. Better, and please don't make any recording of this. That is, वो micro xerox कराते हैं. Anyway, मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ कहा नहीं, आप लोगों ने कुछ सुना नहीं. No sir, ये सर हमारा नेटवर्क से खराब हो गया था. Anyway, you people are quite smart. Now, please, this subject is really very interesting, very easy. But the only problem is that this subject has no continuation of your higher secondary 11, 12 or any subject syllabus. Of course, mathematics is there. It is pure solid geometry. Tough calculus is there. But all these things are in background for those people who have made these softwares, AutoCAD-like thing. Those people are really genius in mathematics, in solid geometry, in calculus, in differential equations, etc. But we are the end user. We are using the tools on screen. Okay. So first we must learn how to use these tools. ये चारों तरफ देखो ना, ये जो नेचर है, नेचर गिविंग अस द एग्जांपल, और थ्योरी वो हम निकलते हैं फिजिक्स में.
और फिजिक्स का वो थ्योरी सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स से। शुरू में जियोमेट्री था, उसके बाद एरिथमेटिक आया, फिर अलजेब्रा हुआ, उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट, लॉगरिथम एटसेट्रा, देन बाद में कैलकुलस, उसके बाद तो बहुत सारे थिंग, ये मैपिंग, बुलियन अलजेब्रा, क्या क्या नहीं हो रहा है। सो ऑटोकैड चलाने के लिए क्या ये ड्राइंग आना जरूरी है क्या? मतलब ऑटोकैड यूज करने के, ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स चलाने के लिए? देखो, इन फर्स्ट सेमेस्टर curriculum wise we do not have any AutoCAD officially, but today you have every facility at your hand. So in your laptop it is very easy to download any older version of that AutoCAD. Maybe some recent version will not be rather supported by your old laptop. It needs so much space, so big RAM, etc., etc. But older versions it will, but it is nothing difficult. And you can get so many learning materials, so many freely available. You can download it from internet and you can learn yourself. You don't need any teacher. But truly speaking, only this pencil drawing will be taught in first semester. In second semester, there is a course which is the graphical solution using CAD. There, 50% of the semester you will work with pencil, eraser, paper, scale, compass. 50% of your semester you will work with AutoCAD. Okay, but I still personally believe, and in my school there are so many such similar kind of people still who believes that there is no replacement of hard copy practice. Paper, pen, pencil, pencil, eraser and instruments, there is no replacement. सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल होता है. इफ यू वांट टू डिलीट एनीथिंग, झट से डिलीट कर दिया, बट टू रीड्रॉ इट ऑन पेपर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, particularly to make multiple original copies. एक ही ड्राइंग बार बार करो, it is very difficult. But when you are using software, you go on taking originals and originals, no photocopies. সফটওয়্যার में 3D অ্যানিমেশন বা 3D ये ইমপ্লিমেন্ট করা খুব ইজি হয়। Everything that is for modern days tool for visualization of any solid object. What we'll start in our next plate number 4, projection of simple solids. So it is so helpful. Just you rotate in different orientation and you find automatically its plan, elevation, side view, auxiliary view, so many things. It's very simple. But people, those who have developed or generated those softwares, they are really master on all these things. We are just getting the benefit of their brain. But we must prepare ourselves so that we can contribute either through open sources or like that. You add some component in those softwares that we can get some other benefit, or we can augment with this part, this addition we can create so many things. But for that you have to build up a very strong foothold on mathematics. So जो लोग सोचते हैं ना इंजीनियरिंग में जाने का मतलब मैथ्स भूल जाना, ऐसा नहीं है. If you are not maintaining your school days, those funda, what I would say, of standard 11, 12 mathematics, then you will be really in big trouble for future higher studies. The good confidence on mathematics will give you a real boost up. Any more? सर हम लोग को सॉलिडवर्क्स सिखाएंगे क्या कॉलेज में? SolidWorks, I don't know. In mechanical engineering department, some people might be working with SolidWorks, but not in civil. सर CATIA, सर CATIA यूज होता है ज्यादातर. CATIA होता है, और जो लोग सिविल में आओगे उन लोगों के लिए कुछ है, स्टैड प्रो है.
And other departments, they have their individual own utility softwares. But most of the people, they learn by themselves, and some people, those prefer to go to some private training institutes. Maybe 2-3 weeks short term courses. अभी ये तो short term course भी online भी मिलता है. Okay. सर एक रिक्वेस्ट था, मतलब आप थोड़ा ये जो मीटिंग का लिंक है, मतलब बहुत जन सबको मैं अभी निकल गया था, मतलब किसी ने मुझे किक आउट कर दिया था, कभी बहुत बार म्यूट भी कर देते हैं, बहुत जन को 6-7 बार निकाल देते हैं मीटिंग से। तो लिंक थोड़ा मतलब आप अगर ऑर्गेनाइजर बन के आए तो अच्छा, मतलब निकाल दे रहे ये लोग अभी। Normally I have full confidence on my student. So देखो, हम तो दरवाजा खोल के नहीं सोते हैं रात में, दरवाजा बंद करके सोते हैं, लेकिन चारों तरफ तो मेरा चोर नहीं है ना. So you have to keep faith on your rather batchmates, your classmates, your fellow members. Okay. बैच में नहीं कोई एक ही करता है, मतलब हम दोस्त लोग जो लोग हैं, मतलब वो लोग नहीं करते, पर बहुत जन कर देते, मतलब. So I on behalf of you. ये भी थोड़ी देर पहले कर दिया था, मैंने कुछ नहीं बोला सर. बहुत जन को अर्पण सारे सबको निकाला था बहुत दिन, मतलब 2-3 बार तो निकाल ही देते हैं कभी कभी. आपके आने से पहले हम सारे तो बात गुस्सा हो जाते हैं सर. Sir, it's very disturbing. It would be very good if you change the setting. Setting मतलब देखा बेटो. Is the class over? सर कभी कभी तो मतलब इतना गुस्सा आ जाता है कि